स्टे लेने के बाद दिस इज नॉट अ गुड नहीं प्रैक्टिस। सर उस दिन हम अपीयर नहीं हो पाए थे, इसलिए नहीं हो पाए होंगे। फर्स्ट हियरिंग में सर, फर्स्ट हियरिंग नहीं अपीयर हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको तो रिप्लाई फाइल करने से किसने रोका था? ये जो सर ऑर्डर पास हुआ है, इम्प्यून ऑर्डर है सर, इसलिए रेशनलाइजेशन के तहत इन्होंने पास किया है। आपको नहीं जाना तो आप घर जाओ अपने, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हो गए। नहीं, ये किसने सिखाया आपको? ये कौन है सीनियर आपके? कौन है सीनियर आपके? ये बताइए विकास जी। से कम से कम ओनली वन डे टाइम। देखिए श्री विकास मिश्रा is for time to cure the default pointed out by the registry is granted 2 weeks time to cure the default for employee list thereafter. डिफॉल्ट की बात कैसे चलेगी यार? आपने कब लिया था स्टे? डिफॉल्ट नहीं, क्यों नहीं दिया पीएफ? 11/1/2023 फिर क्यों नहीं दिया पीएफ आपने? स्टेट में सर पीएफ नहीं हुआ था सर, पीएफ अभी लास्ट डेट में जो लगा था सर 17/2 को उस दिन हुआ था। फिर डिफॉल्ट वी क्योर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। नहीं स्टे लेने के बाद दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सर उस दिन हम अपीयर नहीं हो पाए थे, नहीं हो पाए होंगे। फर्स्ट हियरिंग में सर, फर्स्ट हियरिंग नहीं अपीयर हो तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर फर्स्ट हियरिंग में स्टे नहीं हुआ था। एक सेकंड, नहीं हुआ, नोटिस नहीं हुआ था फर्स्ट हियरिंग। जिस दिन स्टे हुआ था सर 11/1/23 को ही तो स्टे हुआ है। हाँ सर, उस दिन नोटिस नहीं हुआ था सर। स्टेट को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद सर 17 आउट ऑफ स्टेशन, फिर आपने टाइम बढ़ाया 17/2 को। फिर आपने नोटिस कर दिए, जब आप कोई आया नहीं 24/2 को, तो क्या करते? फिर आपको पीएफ देने, आप आए ही नहीं ना, इसलिए सर मैं आज ही कर देता। नहीं ये सब नहीं, कॉस्ट पे टाइम देंगे। देखिएगा, petitioner is now seeking time to cure the default. He is enjoying the stay order on his transfer. Full stop. Stay was granted on 11/1/2023. आपको तो रिप्लाई फाइल करने से किसने रोका था? नहीं सर, मैं फॉर्मल हूँ सर, मिशन ये फाइल दी रिप्लाई क्या मेरिट पे बताइए, मेरिट पे बताइए। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है इनका? My lord, the petitioner has been transferred from Mandala to Damu. ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, इनका ट्रांसफर हो सकता है, इतना बता दीजिए बस। कहाँ है प्रोविजन? Yes, my lord. If my lord may please come to page 18 for reply. जी, page 18, yes. My lord, clause 25 of the contract. जी पढ़िए। आपकी पदस्थापना परिवर्तन करने का अधिकार राज्य आजीविका फोरम अथवा NRLM को होगा। जी My lord, page 32, clause 32 in the same page. जी आप सेम पेज, my lord, page 18. Clause 32. एक सेकंड रुकिएगा। Reply. पेज क्लॉज 25 and 32, my lord, are relevant. 32। आपकी पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर मिशन के जिले में परिवर्तन उप स्थानांतरित करने का अधिकार राज्य आजीविका फोरम को होगा। जी my lord, ये कौन सी पॉलिसी लगाई थी इन्होंने इस पे स्टे दिए हैं? my lord, if I may. एक से रुक जाइए। E4 की 9.1 पेज नंबर 21 है। हाँ जी। 9.1 के बारे में क्या कहा आपने? ये तो बात का है, आपका जो आप दिखा रहे हो 2013 का है, ये आपके ही अपर मुख्य सचिव ने 2020 में जारी किया है। If my lord may please refer to annexure R24. R24, yes. And page number 26. Page 26, yes. My lord, this issue has already been settled by this honorable court. We have filed the judgment. They have taken into consideration the same objection that are being raised before this honorable court. अच्छा,
क्या कहा उन्होंने? My lord, may please refer to my lord last paragraph of page 26. London Council for the Petitioner has placed reliance on circular dated 24 to 2020, wherein there is no provision of transfer of a contractual employee because his services is not permanent in nature, but his place can be changed on extreme condition and on administrative exigency. But the order does not reflect any condition or administrative exigency. My lord, बताइएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहाँ है? There is your appointment order. वही तो पढ़ा था। page number 26, भी लगा सर पेज नंबर 26 पे page number 18 में जो कंडीशन थी था इनकी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की है। ये एग्रीमेंट है सर। हाँ, ठीक है, तो क्या फिर उसके बाद क्या बचता है? देखिएगा, श्री विकास मिश्रा, लंदन काउंसिल फॉर द पिटिशनर। सर मेरा भी सुन ले। डिले इन पेमेंट, हाँ, डिले इन पेमेंट ऑफ पीएफ इज कंडोन एज काउंसिल फॉर प्राइवेट रिस्पोंडेंट private respondent, my lord, 2 and 4. for 2 and 4 is appearing and has already filed reply. ये बताइए। I have challenged my transfer order on certain grounds, Lord sir. जी। First ground is there is a आपको provision. सिर्फ एक ग्राउंड पे स्टे दिया गया था कि 9.1 जो है वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का ट्रांसफर नहीं किया था। ये इशू ऑलरेडी WP 18139/21 में डिसाइड हो गया। Sir, ठीक है, सर ये WA 281/2021 हाँ। डिवीजन बेंच आई हैव फाइल्ड दैट ऑर्डर P5 WA 281/2021 P5 पेज नंबर 24 एंड 30। जी, इसको देखें सर एक बार। आप बिल्कुल देखेंगे। इसमें सर डिवीजन बेंच ने सर ये बोला है देयर इज ए क्लॉज 9.1 under which the a contractual employee can be transferred but only on the special circumstances. वो तो उनको डिटरमाइन करना है ना। हाँ, हाँ। कोर्ट ने सर इसी पे बोला है। ये ऑर्डर तो सर्टिफाइड नहीं हुआ ना। नहीं। 18139 सेटिस्फाइड हो गया क्या डिवीजन बेंच से? नहीं सर, उसको तो अगर चैलेंज नहीं किया तो उसका नहीं बोल सकते सर। लेकिन ये जो सर इस पिटीशन में जो सर बोला है, और दूसरा सर मेरा अकाउंट है रेशनलाइजेशन। ये जो सर ऑर्डर पास हुआ है इम्प्यून ऑर्डर है सर, इसमें रेशनलाइजेशन के तहत इन्होंने पास किया है। आपको नहीं जाना तो आप घर जाओ अपने, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हो ये रेशनलाइजेशन के बारे में सर ये ऑर्डर बोलता है बिकॉज रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैज बीन ट्रांसफर्ड इन प्लेस ऑफ मी। सो और सर इनकी जो पॉलिसी है सर 24/2/2020 एनेक्जर P4 सर, इसमें रेशनलाइजेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। मैं लॉर्ड ने भी जब फर्स्ट हियरिंग में सर देखा था आपने, मैं फॉर ए मोमेंट की लॉर्डशिप में सी एनेक्जर P1 इम्प्यून ऑर्डर सर पेज नंबर 13 में भी सीन। पेज नंबर 13 सर ये बॉटम में सर देखें क्लॉज 2 जो है कर मेरिट पेज नंबर 13। यस, कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के आधार पर युक्तिकरण आदेश जारी किया जा रहा है। जी। Now, what is the policy regarding the rationalization? If I am a surplus employee, Your Lordship, then how the respondent number 5 can be brought in my place, Your Lordship? There is no policy regarding the rationalization. They have nothing said in the reply about that. जी बताइए। While the transfer was on administrative grounds. हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में पढ़िएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ये जो आप पढ़ रहे थे ना पेज 26 पर, 26 पे तो ऑर्डर है। क्लॉज पढ़ रहे थे ना आप? 26 पे नहीं, पेज नंबर 17 है। हाँ 25 18 पर 25 पेज नंबर 18 में दे आर एक्सेप्टेड दैट वाला नीचे लिखा है। हाँ। पेज नंबर 18 पे उपरोक्त वर्णित निबंधन एवं सेवा शर्तें मुझे स्वीकार है। जी। Undertaking the one given by the petitioner. My lord, also I bring to my lord's attention to page number divisional bench order of this honorable court at page number 19. 19 क्या कहा? WA number my lord 930 of 2021. जी क्या कहा? My lord, findings are relevant at page number 23. पैरा नंबर 6 is the finding, my lord. जी। In the view of the specific stand of the respondent that the services of the appellant are transferable, and further that the appellant has been transferred after nearly 6 years from the present place of posting and on the ground of administrative exigence.
Herein, my lord, the petitioner has been working since 8 years at the same post. Now, your Lordship, may kindly see the judgment of the division bench, Lordship. Page number 26, Lordship. Page number 27, Lordship. Para number 6, Lordship. Learned counsel for the respondent number 5 submitted that the appellant and her husband had applied for their posting at one place in Jabalpur solely on the ground of husband and wife being government employed in the same department. It is further submitted that the old age parent of respondent number 5 parent number 7 on a bare perusal of the impugned order of transfer, it is graphically clear that transfer has been issued in reference to clause 9.1 of the circular dated 24/2/2020 passed by the Punjab and Rural Development Department, Government of MP. The said circular was issued in respect of delegation of administrative and financial powers under the MP Raj Gramin Ajivika Mission by suspending all previous circulars. As per clause 9.1 of the said circular, it is provided that the service of the contractual employees are meant for a specific place and for specific work, and therefore the services are not transferable. However, considering the administrative arrangements in special circumstances, services of such employee can be transferred. In the impugned transfer order, it is stated that the appellant and other employees whose names are mentioned in the said list have been transferred, keeping in view of the administrative exigencies. The transfer of the appellant cannot be said to be under rationalization because the respondents have failed to establish that the appellant is a surplus employee at Jabalpur. On the contrary, in place of appellant her transfer, the respondent number 5 has been posted. There is nothing on record to indicate that the appellant has been transferred under rationalization. Transfer of contractual employee has been permitted by virtue of clause 9.1 of circular dated 24/2/2020 only in special circumstances. The respondents have failed to show that there are special circumstances under which the appellant has been transferred. It is not the case of the respondent number 2 and 4 that there is any administrative exigency in respect of continuation of the appellant at Jabalpur. The respondent number 5 and her husband have been transferred at Jabalpur on their own request. नेशनलाइजेशन का ग्राउंड कहाँ लिया है आपने? मैंने लिया सर। कौन सा ग्राउंड पढ़िएगा जरा। My lord, I may submit. एक मिनट रुक जाइए। कौन सा ग्राउंड है आपका नेशनलाइजेशन का? आपसे जितना प्लीज नहीं पढ़ के बताइए ग्राउंड नंबर कौन सा है? इस हाईकोर्ट का सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप लोग हवा में बहस करते हैं, जो प्लीडिंग नहीं होती उस पर बहस करना चाहते हैं। यही आपको विद्वान अधिवक्ता बनाता है। चलिए, now don't disturb, order सुनिए। This petition is filed by the petitioner being aggrieved of order dated 26/12/2022 passed by the respondent chief executive officer, sorry, by the joint commissioner within bracket administration, Madhya Pradesh State Rural Livelihood Mission, transferring the petitioner whose name appears at serial number 35 9 please 35 whereby petitioner is transferred from development block Mandla district Mandla to development bank Javera district Jammu on the ground that in terms of para 9.1 of the order dated 24/2/2020, petitioner being a contractual employee is not liable to be transferred. Full stop. Next para. श्री आपका शुभ नाम बताइए। Manan Aggarwal. Manan Aggarwal. नहीं, इसके ऊपर लिख लीजिएगा। Learned counsel for the petitioner has placed reliance on the received judgment of Honorable Division Bench of this court in WA 281 of 2021 bracket में सीमा पासी versus state MP and others decided on 25/9/2021 wherein reading from para 8 it is submitted that there is no
wherein it is held that transfer of the appellant cannot be said to be under rationalization, because the respondents have failed to establish that the appellant is a surplus employee at Jabalpur. Full stop. Next paragraph. Shri Madhya Aggarwal in turn submits that respondents 2 and 5 have filed their reply. 2 and 4 have filed their reply. Full stop. Copy of appointment order of the petitioner is available on record as annexure R21, dated 6/5/2013. Full stop. In this order, clause 25 provides for right of NRLM to change place of posting of the petitioner. Full stop. Similarly, clause 35 gives a right of change of district / transfer to the State Livelihood Forum / NRLM on administrative grounds. Full stop. It is submitted that under similar facts and circumstances, a coordinate bench of this court dealt with this issue WP 18139/2021, and after noting judgments of earlier benches in Ashok Tiwari versus Madhya Pradesh Textbook Corporation and another 2010 to MPLJ 662, and also in case of Srimati Vandana Dandotia versus State of MP and others 2013 SCC Online MP 5090, it is held that once clause 15 of the contract provides for change of place of posting on administrative grounds from one district to another, then services of the contract employee being governed by the terms of the contract are transferable, and this aspect has been decided by full bench judgment of this court in Ashok Tiwari Supra. Full stop. Next fact. Taking all these facts into consideration, and also a glaring fact that though learned counsel for the petitioner has argued in the teeth of division bench decision of this honorable court in WA 281 of 2021, but has not taken any ground that petitioner was transferred in the name of rationalization, and that policy will not be applicable. Full stop. In absence of a ground taken and pleaded in the petition, petitioner cannot be permitted to argue without there being specific pleadings in this behalf. Next paragraph. In the present case, it is submitted by Shri Madhya Aggarwal that petitioner was posted at Damoh for last 8 years. At Mandla, At Mandla for last 8 years. Full stop. Now, when this case is taken up in April, another ground of midterm transfer is also satisfied, in as much as by now examinations of children are over or are going to be over 15th of April 2023. And therefore, in view of the fact that since there is a condition in the appointment order itself, which is a contract brought on record by the respondent as R21, and which is duly signed by the petitioner, since there is a clause permitting the respondents to change the place of posting from one district to another, and petitioner had agreed to such change of posting, no indulgence can be shown in the administrative discretion of the authorities to transfer the petitioner from one place to another. Therefore, petition fails and is dismissed. 8 साल से बोलेगा हम 8 साल से हैं सर। मेरा जो लास्ट ट्रांसफर हुआ 27/8/2021 को हुआ, जिस ब्लॉक में भी पदस्थ हूं मैं। Block Damoh is there in Damoh district for 8 years. चलिए। I don't have presence of my senior भी also. नहीं, ये किसने सिखाया आपको ये? कौन है सीनियर आपके? कौन है सीनियर आपके? Who's your senior? AP Singh sir.
उन्होंने आपको ये बताया कि वो आएंगे नहीं और उनकी प्रेजेंस डलवा दी जाए? नहीं बताया सर, इट वाज, तो फिर आपने क्यों कहा? आई बेग योर पार्डन माय लॉर्ड।